Hello and welcome back to my Gharnachuk session. So, as I have already taught you the Stone Age, Modern Age, the 6th century BC Mahajanapada. So, today we will begin with the Indus Valley Civilization. Which is also called the Harappan Civilization. Why Harappan Civilization? Because Harappa being the first place to be discovered or to be excavated by the archaeologist. Okay, so there are major places which has been discovered by the archaeologists such as Mohenjo-daro, Harappa, Okay, I will just mention few and then I will explain later on in question answers format. Okay, next Banavali, next Dholavira, next Lothal, next Chonhudaro, next Kalibangan, next Rakhigari. These are the major places which has been, there are other places as well, but these are the prominent places which has been excavated or excavated by the archaeologist during the discovery of this civilization, and the timeline start from 2500 BC to 1800 BC. More accurately, this one. If we will talk about some major features, like Lothal is known for the discovery. We will read about who excavated this site, and we will read about the importance of these places. Like Lothal is also called a mini Harappan site. It is known for the dockyard. Lothal is known for the dockyard. These are minor informations we will read or learn through question answer format. Okay. Next we talk about the Dholavira. Dholavira is the second largest site of Harappa. This is the second largest site of Harappa. Okay. If we talk about the Kalibangan, it's known for the plug field. Okay. Next, if we talk about the Rakhigari, it is the largest site of Indus Valley Civilization. This is the largest site of Indus Valley Civilization. Okay. And the second largest, as I already told you, is Dholavira is the second largest. Okay, Harappan is the first site being excavated. Harappa and Mohenjo-daro both in present-day Pakistan. Mohenjo-daro is known for the Great Bath. These are not the only features. There are other features as well, which I will explain later on. Here now I'm just giving you a brief intro so that you don't feel naive or out of the box while solving questions. Okay, you have some idea about the Harappa. Okay, if we talk about the Harappa, situated on which city? Harappa situated on Ravi river. If we talk about the Harappa, these sites located on which river? Not city, river. Okay, so Harappa situated on Ravi river. Okay, Mohenjo-daro on Indus river. Okay, if we talk about Lothal on Bhogwa river. Okay, there are other major sites like Ropar on Satluj river. Okay, Ropar on Satluj river. Manda on Chenab river, which is in present-day Jammu and Kashmir. Demabad in Pravara river. Alamgirpur Hindon river. These are IVC sites, Harappan sites. Okay, Alamgirpur on Hindon river, Bhagwanpur on Saraswati river. So let's move to some other major facts. If I talk about Harappan is known for the silver. हड़प्पा जो है वो सिल्वर के लिए जाना जाता है और वो हमें जवार और अजमेर माइंस ऑफ राजस्थान से मिलती है, ठीक है ना। कहाँ से?
Ajmer or Jawahar mines of Rajasthan. So we get silver or metal from that period from the Rajasthan mines, and the locations are Ajmer and Jawahar. Okay, these are known for the silver. Next, if we देखें कि we get tin from the Iran. tin हमें ईरान से मिला. Okay. Copper, already mentioned, copper from Khetri mine, Rajasthan. Copper from Khetri mine, Rajasthan. Silver, already mentioned, silver from Ajmer or Jawahar region. Lead from Afghanistan. Lead from Afghanistan. Lead from Afghanistan. Okay. If we talk about the Harappan pottery, I mean which colors and what the pattern been found. So Harappan pottery been the bright and dark red. Pottery been the bright and dark red. Okay. Next, if we talk about the infrastructure, how they build the buildings, different citadel and lower areas. So they use the burnt bricks. Okay. There are some other facts as well. No, now we will move to the question answer format. This much introduction is enough. Next. Question number 1, human society is unique because it depends mainly on economy. देखो human society economy पे ही depend रहती है. If there are sectors, primary, secondary, tertiary sector, ठीक है ना? Primary sector agriculture, secondary is manufacturing, tertiary is service sector. So if we are earning, our family members are earning, they are solely dependent on economy. Culture is part of that, but culture doesn't give us the income. We cannot depend on culture. For that we need economy to grow. Okay. So jitne bhi science is a part of economy. Like if there is some innovation in science that will help us, that will help to promote the economy, that will help in development. So science is a part of science will help in development, which ultimately will lead to a better society. Okay. It's a common sense. Human society is unique because it mainly depend on economy. Next question, which of the following Harappan civilizations क्या related है? Indus Valley civilization. This other name of Harappan civilization is Indus Valley civilization. Okay. Indus Valley civilization, as I've already told you, protohistoric. Prehistoric was Stone Age. Prehistoric was Stone Age. Protohistoric Indus Valley civilization. And historic started from the Vedic era. From the Vedic era. Next question number 4, Indus Valley civilization was non-Aryan because non-Aryan क्यों थी? क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी. क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी. देखो जो आर्यंस का जो सिविलाइजेशन थे ना, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैदिक एज में, that was a rural society. That was a rural society. But the Indus Valley civilization was an urban civilization. Aryan society was an agricultural economy. ठीक है ना? नेक्स्ट अगर हम देखें, द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन इज potteries. The knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than different villages evidence pottery have been found in early settlement of Mehrada from the Indus Valley. Pottery found during excavation prove that Indus was started in this before. कहने का मतलब ये है कि हमने why Aryan civilizations been put behind and Indus Valley civilization been put forward. The reason being potteries. Potteries found during the excavation prove that the Indus Valley civilization existed before the Aryan civilization. Okay, and I already told you the color of potteries. It was a red potteries and the black figures. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन. देखो जो इंडस वैली कल्चर है वो वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है. एक तो मैंने आपको बताया वो अर्बन सिविलाइजेशन थी. सो ऑप्शन इज करेक्ट. इट हैज एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ. नेक्स्ट, इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी. ठीक है, and that was written from right to left. Written from right to left. Okay, written from right to left.
उनको अभी तक कोई रीड नहीं कर पाया. नो वन कुड decipher those scripts. Next, if we talk about it lacked the knowledge of, there was iron जो है ना वो वैदिक एज में फाउंड किया गया. Copper was related to the Indus Valley civilization of the iron. Okay, so it lacked the knowledge. So all of the above mentions are correct. Next question, अगर हम देखें the source of knowledge about the Harappan culture is, हमें कहाँ से पता चला हरप्पन कल्चर के बारे में? डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया, ठीक है ना, वहीं से पता चला, ठीक है ना. रॉक एडिक्ट वगैरह तो अशोकन के टाइम पे आए ये सब चीज़ें, ठीक है ना. नेक्स्ट, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हरप्पन कल्चर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें डिस्कवरी से पता चला, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिविलाइजेशन बीन एग्जिस्टेड. नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट पूछा है अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट डिस्कवर्ड फ्रॉम, देखो सील्स जो है ना, टेम्पल्स तो नहीं थे, मतलब डेफिनेटली देयर वाज आइडल फिगर्स बट टेम्पल वाज नॉट देयर. स्क्रिप्ट से कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनको अब तक रीड ही नहीं कर पाए कोई, ठीक है ना. इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट कैन नॉट बी डेसिपर्ड. ओके, utensils, jewelry, weapons, incense, only through the seals we have get to know about the inhabitants of the Indus Valley civilization. Okay, there were more than 3,000 seals found. कितने? More than 3,000 seals were being found. Okay. Next, if we talk about the question number 10, which of the following is not correct? Not correct पूछा है. Not correct पूछा है. Let's skip this question. Move to the question number 11. ओके, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है. हरप्पन, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी. सो हु फाउंडेड दिस? हरप्पा बीन फाउंडेड बाय दयाराम सहनी. हरप्पा बीन डिस्कवर्ड बाय द दयाराम सहनी. हस्तिनापुर डिस्कवर्ड बाय द बीबी लाल. तक्षशिला डिस्कवर्ड बाय द जॉन मार्शल. कौशाम्बी डिस्कवर्ड बाय द एन.जी. मजूमदार. ओके, तक्षशिला बीन डिस्कवर्ड बाय द एन.जी. मजूमदार. Read and rewind this video. Next question है the earliest evidence of silver in India. देखो हरप्पन civilization से ही we found the earliest evidences of silver in India. Okay. Next question, which color was commonly used in हरप्पन pottery? में कौन सा कलर यूज हुआ था? अभी मैंने बताया red and black color. Next question है the beginning of idol worship is to be considered in. देखो जो idol worship है ना वो प्री आर्यन एज में थी. कह सकते हो कि जो पशुपति फिगर्स मिली है, पशुपति सील कहीं ना कहीं टेराकोटा आर्ट मिली है, ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल सकती है. बट आर्यन एज में आइडल वर्शिप नहीं थी. यज्ञ इट वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड द यज्ञ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट? कौन सा एनिमल रिप्रेजेंटेड नहीं है? देखो काउ मेंशन नहीं है, ठीक है ना. एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, लायन भी नहीं है. काउ एंड लायन नहीं मेंशन है. एलिफेंट, टाइगर, राइनोस मेंशन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हरप्पन साइट? इनमें से हरप्पन साइट कौन सी नहीं है? चान्हुदारो है, देसालपुर है, कोटदीजी है. सोगोरा इज नॉट हरप्पन साइट. ओके. सोगोरा इज नॉन फॉर द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. थोड़ा ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन याद कर लीजिए. Sogora is known for the copper plate inscription of the Mauryan period. Okay. Next, if we talk about the ancient site and archaeological findings, in the पूछा गया कि ये जो different sites हैं, what archaeologist finding we get to know, हमें यहाँ से क्या मिला. मैंने अभी बताया था कि लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला. कालीबंगन से मैंने जब आपको ब्रीफ इंट्रो दे रही थी प्लग्ड फील्ड मिला. बनावली से टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग. देखो ये थोड़ा डिफरेंस आप याद कर लीजिए. कालीबंगा और बनावली में देखो कालीबंगम में प्लग्ड फील्ड मिला, बट बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ दैट प्लग फील्ड मिला. नेक्स्ट बचा धोलावीरा इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 large side signs of Harappan script. Option number B is correct. Next question, a plugged field was discovered from Kalibangam, as I already mentioned. Next, same question, plugged field, Kalibangam. Next question, Lothal dockyard. Okay.
मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल, कालीबंगम फॉर ये हरप्पा सिमेंट्री R37, as if I am getting correct. Yes, option number D is correct. So अगर हम बात करें, अभी हमने हरप्पा का देखा था, हरप्पा का नहीं था ना, सो हरप्पा से हमें सिमेंट्री R37 मिली है, लोथल का हमने देख लिया था, कालीबंगम का भी हमने देख लिया था थोड़ा, तो वही क्वेश्चन है, बस उसको प्लग फिल कीजिएगा। फॉर मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग साइट्स मेंशन है एंड कौन से रिवर पे सिचुएटेड है वो हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट हरप्पन ऑन द रिवर ऑफ रावी, हरप्पा ऑन द रिवर ऑफ रावी, हस्तिनापुर ऑन गंगा, नागार्जुनकोंडा ऑन कृष्णा रिवर, Petan on Godavari river. Okay, these cities are situated on these rivers. Please do remember. Okay, next question अगर हम बात करें सेम हरप्पा ऑन रावी, okay, हरप्पा ऑन रावी, कालीबंगम ऑन घग्गर, लोथल ऑन भोगवा रिवर एंड रॉपर ऑन सतलुज रिवर, लोथल ऑन भोगवा रिवर एंड रॉपर ऑन सतलुज रिवर। Let's reread this portion. Harappan Ravi river, okay, Kalibangam Bhaggar river, Kalibangam is in present day Rajasthan, Kalibangam Harappan settlement is in present day Rajasthan. Next question, same question, Harappa is situated on Ravi, Great Bath Mohenjo-daro, Great Bath again Mohenjo-daro, given you already mentioned this fact in brief intro. Next question, from which archaeological site of Indus Valley civilization the figures and models boats are found? ये थोड़ा न्यू फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। इसमें लिखा है कि जो क्ले मॉडल्स की जो बॉट्स है वो कौन सी जगह से हमें मिली है, तो वो 2 जगह से मिली है। वी हैव डिस्कवर्ड दिस फ्रॉम 2 साइट्स, फ्रॉम मोहनजोदारो एंड लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट नहीं है? देखो, first option, if you see, accurate drainage system, definitely it's correct. Trade and commerce with the advanced stage, definitely correct. Worship of mother goddess, absolutely correct. People knew about the iron, no, they were not well versed with this metal. They knew about the copper, they knew about the lead, but they have no idea. They have bit, they get gold from the Karnataka. I have not taught you this fact. They got gold from the Karnataka, tin from the Iran, ठीक है ना, tin from the Iran, copper from the Khetri mine, okay, silver from the Rajasthan mines, Ajmer. Next, but if you talk about the iron being discovered from Vedic era, from Vedic age, not from the IVC. So option number D is correct. Next question, based on the findings of excavation of Harappan civilization, what are not true? इनमें से क्या सही नहीं है? So if you see the options, for all kind of construction, same size of bricks were used. Yes, they were in the ratio of 4:1. Next question, mostly all the houses were single story. इसमें लिखा है कि mostly जो house थे वो single story थे. Yes, mostly, not all. Mostly लिखा है ना, not all. So there was also double story house as well. Main road were on average 10 meter in a width. Okay, इसमें लिखा है the main road were on average 10 meter width. Okay, no, option number 3 is correct, but option number 2 is incorrect. Yes, the main road were on average 10 meter width में थी, but इसमें लिखा mostly all the houses were in single story. नहीं, sorry, I will reread this question. Mostly नहीं, सभी single story नहीं थे, double भी थे, triple story भी थे वहाँ पे, ठीक है ना। Option में second is correct, first and third is correct. So having this in mind, option C is correct, ठीक है ना। अभी इन्होंने ये गलत दिया, यहाँ पे C होना चाहिए। आप थोड़ा explanation भी देख सकते हो। इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है। ओके, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। फॉर ऑल द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स, skip this question. डेफिनेटली 4:1 की रेशो में ही वहाँ पे ब्रिक्स यूज की जाती थी, बट
मैंने इन्हीं को सेम समझ लिया कि हाँ इसी साइज़ की जो ब्रिक्स थे वहाँ पे यूज़ की जाती थी, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है सेम साइज़ की ब्रिक्स यूज़ की जाती थी। उन्होंने रेशो में पूछा है, तो रेशो तो सेम नहीं है, रेशो तो सेम नहीं है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट अलग सम अदर प्लेसेस, कालीबंगा देयर कर्व्ड ब्रिक्स आल्सो यूज्ड, चनहुदारो बीन फाउंड, जो कर्व्ड ब्रिक्स भी चनहुदारो से मिली है, चनहुदारो से हमें कर्व्ड ब्रिक्स भी मिली है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। हमें चनहुदारो से कर्व्ड ब्रिक्स भी मिली है, जनरली 4:2:1 की रेशो में हमें मिली है, बट चनहुदारो से हमें कर्व्ड ब्रिक्स भी मिली है, ओके। और सिंगल स्टोरी नहीं है, जनरली सिंगल स्टोरी नहीं है, डबल एंड ट्रिपल स्टोरी हाउसेस भी थे वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indus Valley civilization is known for its town planning, is known for the Mohenjo-daro and Harappan, correct, for their agriculture work, correct, for their industrialization. All of the above mentioned options are correct. All of the mentioned options are correct. All of the above options are correct. If we talk about the next question, which of the following is not correct? Again not correct. Please do correct this. अभी मैंने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने उसको नोट को करेक्ट पढ़ लिया था, तो उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30. If we talk about the Alamgirpur is in UP, correct. Lothal is in Gujarat. Dholavira is also in Gujarat. Ropur in Punjab. If you talk about the Kalibangam is not in Haryana, it is in Rajasthan. Kalibangam is in Rajasthan, not in Haryana. Okay. Next question. Which of the following centers related to the Indus Valley civilizations are situated in Uttar Pradesh? They asked which of the following locations are situated in Uttar Pradesh. Okay. Kalibangam in Rajasthan, first is incorrect. Lothal is in Gujarat, incorrect. Alamgirpur and Hullas, these two regions are in UP. Next question, which one of the following Harappan sites is in Gujarat? Lothal is in Gujarat, ठीक है ना. राखीगढ़ी in Haryana, Kalibangam in Rajasthan. Okay. Next question, for the Harappan cultural sites and its position, which of the following is not correctly matched? इनमें से करेक्टली अभी मैंने देखा आलमगीरपुर यूपी में है, बनावली हरियाणा में है, देमाबाद महाराष्ट्र में है. इसको या आपके लिए न्यू फैक्ट है तो इसको प्लीज याद कर लीजिए. राखीगढ़ी हरियाणा में है. राखीगढ़ी इज इन हरियाणा. राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, नॉट इन राजस्थान. ओके, नॉट इन राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें हमें थोड़ा याद कर लेना है कि हरप्पन कल्चर की नॉर्थर्न बाउंड्री, साउथर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री. सो वी विल स्टार्ट with the northern boundary. Northern boundary is Manda. And the southern boundary is Daimabad. Manda is in Jammu and Kashmir. Daimabad is in Maharashtra. Manda is in Jammu and Kashmir. Daimabad is in Maharashtra. If we talk about the western east boundary, so the west boundary is Sutkendur, which is in present-day Pakistan. Sutkendur, okay, is in western boundary. Eastern boundary is Alamgirpur. Which is in UP, okay. Northern boundary Manda, southern boundary Daimabad, eastern boundary Alamgirpur, and western boundary Sutkendur, which is in present-day Pakistan. Next question, हमें लोकेशन बतानी है. As I've already explained you, Manda is in present day Jammu and Kashmir. Daimabad is in Maharashtra. Kalibangam is in Rajasthan. Rakhiguri in Haryana. Okay. Option number C is correct. Next question. Harappan sites. They asked about the sites and the location in which state they were located. Okay. Next we talk about Balu. If we talk about the Balu is situated in Gujarat. Balu is situated in Haryana. Please, I'm correcting myself. Balu is in Haryana. Okay. Manda is in Jammu and Kashmir. Already taught you Manda is in Kashmir.
पादरी इज इन गुजरात, हुलास इज इन यूपी. सो हमें मंडा का पता था, हुलास का पता था. सो नाउ वी गेट टू नो द टू न्यू साइट्स, बालू एंड पादरी. बालू एंड पादरी. बालू इज इन हरियाणा. ओके. पादरी इज इन गुजरात. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If we talk about, इसमें option number D is correct. Next question, which of the following sites of Harappan culture are located in Sindh? Sindh बोले तो present day Pakistan. Which of the following sites are in present day Pakistan of Sindh area? Okay, Sindh provinces. Okay, Sindh province. Mohenjo-daro and Chanhodaro. Okay, Mohenjo-daro and Chanhodaro. Harappa is also in present-day Pakistan, but this is not in Sindh provinces. Harappa is in Punjab province of Pakistan. Okay? देखिए पंजाब प्रोविंस ना इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है. पंजाब प्रोविंस, हरप्पा. Mohenjo-daro and Chanhodaro are in Sindh provinces. Mohenjo-daro and Chanhodaro are in Sindh provinces. Okay? And if you talk about the Surkotra, it is in Gujarat. ये गुजरात में है. ओके, ये गुजरात में है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हमें सिंध प्रोविंसेस का पूछा है. सिंध प्रोविंसेस में मोहनजोदारो और चौहदारो. ओके. नेक्स्ट, मोहनजोदारो सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. कहाँ पे? इन सिंध प्रोविंसेस, पाकिस्तान. देखिए द सेम क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन यूपीपीएससी 2010 and this again the same question asked in 2012 of MBPSC. Next, if it learn few facts like who excavated these sites. If you are not able to recall, please keep pen, A4 sheet and pen and do write these facts. Like question number 39, the excavation at Chanhodaro was directed by J.H. Mackay. So excavation at Chanhodaro was directed by J.H. Mackay. Okay. Although if you talk about the excavated and discovered, two facts related to Chanhodaro. ठीक है ना? Excavated and discovered. It is discovered by the N.G. Majumdar, but excavated by the J.H. Mackay. So we are talking about the Chanhodaro. Okay, which is in present day Sindh, Pakistan, of Sindh provinces. Okay, Sindh provinces of Pakistan. Next, which site of Indus Valley civilization are now in Pakistan? हरप्पा, कालीबंगम, लोथा, आलमगीर का हमको पता है. ठीक है ना? कालीबंगम राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन. जो रंगपुर है वो कहाँ पे है? रंगपुर अभी प्रेजेंट डे गुजरात में है. कहाँ पे है? गुजरात में. और कहाँ पे? गुजरात के कौन से रीजन में है? सोरस्त्रा. कहाँ पे है? सोरस्त्रा, रंगपुर. सो देयर आर, वी नो 3 साइट्स, लोथल, धोलावीरा एंड रंगपुर are in Gujarat. Next question, there is a late Harappan site of. देखिए ये in which state this region is located is in Punjab. हमें पंजाब का, ठीक है ना? ये कहाँ पे? हमें रोपर का पता था. रोपर is in Punjab. एक और पता चला, there is also in Punjab. Next question, which site of the Indus Valley civilization is located in India? इंडिया में कौन सी साइट लोकेटेड है इनमें से इंडिया में कौन सी? देखो, लोथल गुजरात में है. लोथल इज इन इंडिया. ठीक है ना? लोथल इज इन इंडिया, which is in Gujarat. Next question, the Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated. इसमें पूछा Lothal situated on which river? Situated on the river Bhogwa. I've already told you, on Bhogwa river. Next question, Harappan civilization Lothal is in Gujarat में है. Where is it? It is in Gujarat. Next question, the port city of Indus Valley civilization. Ports, और Lothal was also port city. ठीक है ना? Because the Gujarat have a borderline with Arabian Sea, so definitely it's not hard to remember. It's very easy to remember. So it's a port city as well. Next, which of the following is a Harappan port? Lothal.
ठीक है ना, लोथल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? देखिए, बर्न ब्रिक्स, बिल्डिंग्स, बर्न ब्रिक यूज की जाती थी, वर्शिप भी थी, ठीक है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्ट भी था, आर्ट एंड आर्किटेक्ट भी था, वेल प्लान आर्किटेक्चर था, ठीक है ना. तो इसमें से मोर कह सकते हो कि आप मोर देन one of the above is correct, so option number E is correct. Okay, next, at which of the following Indus Valley civilization sites was a terracotta replica related to the exploration of plug discovered. इसमें पूछा है कौन सी में exploration of plug discovered. I think कालीबंगम, इधर बनावली और कालीबंगम. Yes, कालीबंगम. Option number B is correct. Brief intro I have already given you. Okay, next question, question number 50. Let me have a look how many questions we need to cover. There are 92 questions. Okay, the further question we will cover in the next session. So today we have done with 49 questions. Next session will be start from question number 50. So please do like, share and subscribe. Thank you so much. Okay.